आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग इंजन कूलिंग सिस्टम पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इसमें हम पढ़ने वाले इंजन कूलिंग सिस्टम। तो इंजन को कूल करने के लिए हम लोगों को कौन कौन से सिस्टम्स अवेलेबल है ये हम लोग देखेंगे। तो द क्लासिफिकेशन ऑफ कूलिंग सिस्टम इज गिवन हियर. The first one is called as the direct cooling system, or it is also called as the air cooling system, and the second is called as the indirect cooling system or liquid cooling system. Okay, basically we categorize the cooling system into two types. Number one is direct cooling, or it is also called as the air cooling system, and second is indirect cooling, or it is called as the liquid cooling system. And the liquid cooling system or indirect cooling system is further classified into two types. The first one is called as the thermosiphon cooling system, and the second one is called the pump circulation cooling system, or it is called a thermostatic cooling system. It is called a thermostatic cooling system. So we will see one by one what is thermosiphon cooling system, or what is direct cooling system or air cooling system. We will see one by one. So first is the direct cooling system or the air cooling system. What is it is? Air cooled engines depends on the airflow across the external surface of the engine cylinder to remove the necessary heat. क्या होता है, जो एक्सटर्नल एयर फ्लो है उसके ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, द कूलिंग ऑफ द इंजन इज डिपेंड अपॉन द एक्सटर्नल एयर फ्लो विच अक्रॉस द इंजन सरफेस, एंड द अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेटेड डिपेंड्स अपॉन द, और जो भी अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेट हो रही है, जो भी अमाउंट ऑफ हीट विड्रॉ हो रही है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन द फोर पैरामीटर. द नंबर वन इज कॉल्ड द एरिया ऑफ कूलिंग सरफेस इन कॉन्टैक्ट विद द एयर. It is the surface area. Okay, with the surface area of cooling surface in contact with the air. Then second is the mass flow rate of the air, that is m dot a, mass flow rate of the air. Then third one is the temperature difference between the cylinder and the air, that is temperature of engine minus temperature of air, that is ambient temperature. This is the temperature difference between the cylinder and the air. And the next is the conductivity of the metal. It is the conductivity of the metal. It is denoted by K. Okay, we learn in the heat transfer the law. It is called as the minus K surface area into dt by dl. It is the Newton's law of cooling. Okay, the Newton's law of cooling. This is the conductivity of the metal, then the surface area, then the temperature difference, and the length across which the air flow. Then Newton's law of cooling also given by the amount of heat dissipated depends upon the four parameters, that is the area of cooling surface in contact with the air, then second is the mass flow rate of the air, third is the temperature or difference between the cylinder and the air, and the fourth is the conductivity of the metal, that is the K. Conductivity of the metal depends upon the material. Okay, metal to metal, कॉपर का अलग रहेगा, आयरन का अलग रहेगा, स्टील का अलग रहेगा. दिस इज डिपेंड्स, दिस इज द मटेरियल प्रॉपर्टी. Now cooling fins in air cooled system. This is the one of the type of air cooling method. The area of cooling surface increased by forming the thin fins, either integrally by machining them onto the outer walls of the engine cylinder and cylinder head, or by attaching separate fins to the them. ठीक है, fins हम लोगों ने पढ़े हुए हैं. ठीक है, it is the extra surface or extra part which are stick or which are manufactured onto the surface area of the engine cylinder, so that it will increase the surface area of the engine, and if the surface area is increases, the rate of cooling is also increases. So this is the basic fundamental of the cooling fins. As the area of the surface area increases with the help of fins, the heat dissipating property or heat dissipated rate is increases. Okay, with the help of increase in the surface area. Q is minus HA delta T. Okay, the Newton's law of cooling. This is the Newton's law of cooling. There is the heat transfer rate Q. This is thermal. It is the coefficient of air. Then this is the surface area, and this is the delta T.
Okay, HAS delta T. Now, air cooling system advantages. The absence of radiator, cooling jackets and coolant pumps make the engine lighter. इसमें क्या होगा, रेडिएटर नहीं रहेगा, कूलिंग जैकेट्स नहीं रहेंगे, पंप्स नहीं लगेगा, तो ये सस्ता भी मिलेगा और लाइटर भी बनेगा इंजन. देन द इंजन कैन बी ऑपरेटेड इन द कोल्ड क्लाइमेट वेयर लिक्विड में फ्रीज. ठीक है, ये जो इंजन है एयर कूल्ड जो इंजन है, इसमें लिक्विड की जरूरत नहीं होती है. दैट्स व्हाई वी कैन यूज इट इन द कोल्ड क्लाइमेट कंडीशन. ओके, सो दैट द कूलेंट we doesn't require any coolant for the air cool system. So the freezing of the coolant cannot be takes place because we are not using the coolant here. So directly this is the one of the advantages of the air cooled system. Then in place where the water is scarce, air cooled engine is the advantages. जहाँ पे water की कमतरता है, water we will use water as a coolant, हम वहाँ पे एयर कूल्ड इंजन यूज कर सकते हैं. देन द हैंडलिंग ऑफ लिक्विड कूलेंट रिक्वायर द पाइपिंग एंड द पंपिंग ऑक्सिलरीज. तो एयर कूल्ड सिस्टम का एक एडवांटेज है, इसमें हम लोगों को कूलेंट हम लोग हैंडल नहीं कर रहे, तो इसके लिए पाइपिंग एंड दी पंपिंग ऑक्सिलरीज की जरूरत नहीं है. तो इट विल बी चीपर, कॉस्ट इफेक्टिव. ये कैसा कॉस्ट इफेक्टिव है. ओके, देन एयर कूल्ड इंजन्स हैव नो कूलेंट लीकेजेस और फ्रीजिंग प्रॉब्लम्स. एयर कूल्ड में लिक्विड कूलेंट की जरूरत नहीं होती, तो हम लोग इसमें लीकेज का भी प्रॉब्लम नहीं जाएगा और फ्रीजिंग का ही प्रॉब्लम नहीं जाएगा. दीज आर दी सम एडवांटेजेस ऑफ द एयर कूलिंग सिस्टम. Now, what are the disadvantages of the air cooling system? Cooling fins under certain condition may vibrate and amplify the noise level. जो कूलिंग फिन्स है, जो सरफेस एरिया बढ़ाने के काम में आते हैं, वो क्या होता है, एट सर्टेन कंडीशन वो वाइब्रेट करना चालू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ द व्हीकल एंड इट विल एम्पलीफाई द नॉइज लेवल. और नॉइज लेवल सिंक्रोनाइज हो गए किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साथ में, तो इट विल क्रिएट द नॉइज. ओके, देन द कूलिंग पंप इज नॉट यूनिफॉर्म. कूलिंग इज नॉट यूनिफॉर्म, सॉरी, कूलिंग इज नॉट यूनिफॉर्म. कूलिंग नॉट यूनिफॉर्म होगी, कैसे नॉट यूनिफॉर्म होगी, जिस डायरेक्शन में एयर आ रही है और जिस डायरेक्शन में व्हीकल मूव हो रही है. ठीक है, दिस इज द इंजन. so mostly this part of the and this the upper parts certainly gets cooled easily, but the back portion of the engine will not get cooled as possible. Okay, as early as possible. If the direction of the air is in this direction, opposite direction, the traveling of the engine will be in this forward direction, the forward or front side of the engine gets cooled easily, but the back side of the engine will not get cooled easily. Okay, that's why it is called as the not uniform cooling. Then the engines are subjected to the high working temperature. और जो engines है एयर कूलिंग से उतना इफेक्टिव कूलिंग नहीं होगा. दैट्स व्हाई इट विल बी सब्जेक्ट टू द हाई टेम्परेचर. और जहाँ पे इंजन हाई टेम्परेचर के ऊपर जाएगा, देयर विल बी पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्टॉर्शन, ओके, ऑफ द एनी पार्ट्स ऑफ द इंजन. ओके, these are the some disadvantages of the air cooling system. Now we will see the liquid cooling system, or it is called as the indirect cooling system. In this we will see the thermosiphon cooling system. First type we will see the thermosiphon cooling system. In thermosiphon cooling system, we see here the diagram. This is the cylinder 1, cylinder 2, cylinder 3 and cylinder 4. 4-cylinder engine is, this is the 4-cylinder engine. Okay, this is the radiator, the front portion is called, this is the radiator. ठीक है, radiator है. Bottom tank, the upper tank. These are the fins, cross fins and the tubes are present in the radiator. This is the fan, engine fan. What will happen, as the engine is in running condition, the coolant inside the engine will gets heat up. क्या होगा, इसमें जो कूलेंट यूज कर रहे हैं हम लोग, लिक्विड कूलेंट, बिकॉज ऑफ द रनिंग कंडीशन ऑफ द इंजन, टेम्परेचर विल इंक्रीज. क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा. टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, देन द कूलेंट गेट्स हीटेड. ओके, कूलेंट क्या होगा, हीट होगा एंड इट विल वेपराइज्ड वेपर फॉर्म में आएगा. ठीक है, एंड डेंसिटी ऑफ दिस कूलेंट डिक्रीजेस. एज इट डिक्रीजेस इट विल मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन. क्या होगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाना चालू कर देगा धीरे 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 धीरे. तो इट विल फ्रॉम द टॉप हाउस ऑफ द रेडिएटर, इट विल फ्रॉम इंजन इट विल मूव इनटू द फीडर टैंक
of the radiator. क्या होगा? The heated coolant is enter into the heated tank of the radiator because of the heating process. Okay, because of the heating process, and this heated coolant then pass through the number of tubes of the radiator. जो भी नंबर ऑफ ट्यूब्स है उसमें से क्या होगा? ये पास होगा कौन सा? heated coolant. Heated coolant is passes through the number of tubes, and this number of tubes are exposed to the fan. ठीक है, दिस फैन इज रनिंग विद द हेल्प ऑफ इंजन पावर. जो फैन है, ये फैन किसके कारण चल रहा है? इंजन पावर के कारण चल रहा है. ठीक है, और ये क्या कर रहा है? फोर्स कन्वेक्शन कर रहा है. इट विल डू द फोर्स कन्वेक्शन. ये क्या कर रहा है? फोर कन्वेक्शन परफॉर्म कर रहा है. ओके, बिकॉज ऑफ द फोर्स कन्वेक्शन द heated coolant gets cooled and it will be saturated at the bottom of the tank. Bottom of the tank. Okay, and once the engine gets started, the cooled coolant will be enter into the each and every part of the engine, and once again this cycle gets repeated, and that's why it is the automatic cycle. With the help of density variation, the coolant gets circulated through the system. This system is called as the thermosiphon cooling system. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मोसाइफन कूलिंग सिस्टम कहेंगे. ओके, so this is the diagram. You have to draw the diagram of the thermosiphon cooling system. The simple one, you have to create the engine and two house pipes, bottom house and top house. With the help of this engine, coolant gets enter into the from the bottom house, coolant gets enter into the engine, and from the top house, coolant gets heated coolant gets come into the header tank of the radiator, and this cycle gets repeated. Okay, this is called as a thermosiphon cooling system. Then the next is the thermostatic cooling system. Next is the second cooling system is thermostatic cooling system. This is also called the liquid cooling system. Okay, in the thermostatic cooling system there is a thermostatic wall present. This is the thermostatic wall is present. What is the function of the thermostatic wall? We will see here. A modern style cooling system shows how the coolant flows through the block first, then through the cylinder head, and finally through the radiator after the thermostat opens. Okay, so what will happen? The in the generally we will use the water as a coolant. So water is present in the cooling jackets. Okay, there is a water pump is stored here. As the engine will started, temperature will be increased, and temperature will increase, then slowly the coolant, that is water, gets heat up. As the water gets heats up, it enter up to the thermostatic wall. यहाँ पे I will show generally basically यहाँ पे thermostatic wall होना चाहिए. As the liquid gets heat up, the and it's move towards the radiator. और ये कहाँ जाने की कोशिश करेगा? रेडिएटर के पास में जाने की कोशिश करेगा. But there is a thermostatic wall. What is the function of the thermostatic wall? After the certain temperature, this thermostatic wall opens. 40 degree, 45 degree, 50 degree centigrade, the thermostatic wall open, and this heated coolant will pass to the radiator then. Okay, then the heated coolant will be passed to the radiator. Otherwise, the temperature of the coolant is not as much as the requirement of the thermostatic wall. The thermostatic wall will not open, and the liquid coolant will be present inside the cylinder head or cylinder block only. Okay, after certain temperature of coolant, the thermostatic wall opens, and this thermostatic wall allows the coolant to pass through the radiator, and the function of the radiator will takes place, and it will cool the coolant, and once again this cooled coolant will pass through the engine once again, and this cycle gets repeated. This is the function of thermostatic cooling system. This is the function of thermostatic cooling system. Okay, now this is the diagram of thermostatic wall. Okay, this is the pellet material. The function of this pellet material is that as the temperature increases, the pellet material gets melt down.
after a certain temperature, and its valve gets opened and it allows the coolant to pass through the radiator. Okay, and this is the actual thermostatic valve is shown in the engine. This is the actual thermostatic valve. Okay, then another part is called as the water jacket. What is the function of water jacket? This is the one of the part of the cooling system. When an engine cylinder block or head or cast cavities आर कॉल्ड वाटर जैकेट्स. इंजन सिलेंडर ब्लॉक में या हेड में कुछ कास्ट कैविटीज होती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाटर जैकेट्स बोलेंगे. आर फॉर्म अराउंड द सिलेंडर वॉल्स एंड द कंबशन चेंबर. और जो ये जो कास्ट कैविटीज है ड्यूरिंग द कास्टिंग प्रोसेस, देयर सम कैविटी विल बी क्रिएटेड व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग द सिलेंडर ब्लॉक. This called as the water jackets, and this water jackets allows coolant to circulate around the very hot areas. ये water jackets क्या करते हैं, कूलेंट को अलाउ करते हैं सर्कुलेट करने के लिए इन दी हॉट एरियाज इंक्लूडिंग द एग्जॉस्ट वॉल सीट. कहाँ कहाँ करते हैं, एग्जॉस्ट वॉल सीट के पास में, एज वेल एज द रिलेटिवली कूलर एरियाज ऑफ द लोअर सिलेंडर. और नीचे वाले जो लोअर सिलेंडर पार्ट है वहाँ पे भी ये अलाउ करते हैं. द कूलेंट absorb the heat from the hot areas and transfer this heat to the colder areas in the engine or the radiator. Simple. Now the diagram of the water jacket is given. This is cavity, cast cavity. This is called as the cast cavities. This is the cavities. The cavities are called as the water jackets. Then clamps and houses. Houses direct coolant from the engine to the radiator, heater core, and the overflow tank. Clamp holds the houses in place. ठीक है, houses is nothing but it's a pipe, simple pipe. And this pipe, what is the function of this pipe? To flow the coolant from engine to the radiator and from radiator to the engine. Okay, and the function of the clamps to hold the houses or pipe in particular location. Okay, so these are the some examples of clamps: screw tower clamp, then worm gear clamp, the twin wire clamp, rolled edge clamp, and spring clamps. These are the examples of some clamps. In the houses, परफॉर्म हाउसेज आर मेड स्पेशली फॉर एन एप्लीकेशन. जो भी हाउसेज जो होते हैं उसको पाइप्स ही बोलेंगे हम लोग. ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए यूज होगा. फ्लेक्स हाउसेज आर यूज्ड फॉर वेराइटी ऑफ द एप्लीकेशन. सम लोअर रेडिएटर हाउसेज सर्टेन कंटेन अ स्प्रिंग टू प्रिवेंट देम फ्रॉम द कोलैप्सिंग ड्यू टू द वाटर पंप सक्शन. ये काफ़ी टफ प्लास्टिक के बने हुए रहेंगे. कुछ लोअर हाउस जो होता है रेडिएटर का, टू प्रिवेंट फ्रॉम द कोलैप्सिंग टू द वाटर पंप सक्शन. And this diagram of the houses are given. This is the heater, this is the houses, blue color houses, bypass. These are the houses made up of. This is the lower houses, this is the upper house of the radiator, and this is the cross flow radiator. Okay, the diagram of the, this is the diagram of the total cooling system. Okay, the heater, and this is the engine. Okay. From the lower houses, from the upper house, the heated coolant will enter into the radiator, and from radiator it will pass through the multiple passes or tubes, and it gets cooled with the help of cross flow of the force convection of the fan also. ठीक है, and the cooled liquid once again enters into the engine. Then overflow tank. Overflow tank, what is the function of the overflow tank? Contains the reserve coolant. ठीक है, जो भी रिजर्व कूलेंट है वो कंटेन करता है, एक्स्ट्रा वाला कूलेंट कंटेन करेगा ओवरफ्लो टैंक. व्हेन कैप रिलीजेस कूलेंट ड्यू टू द कूलेंट एक्सपांशन, कूलेंट गोस टू द ओवरफ्लो टैंक. ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपांशन हो गया इनसाइड द, बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर इनसाइड द इंजन, तो इट विल, द कैप ऑफ द ओवरफ्लो टैंक opens and the extra coolant due to the expansion enter into the overflow tank and it will be stored into the overflow tank. When cooling system cools off, it creates a vacuum. जब भी कूलिंग सिस्टम कूल्स ऑफ हो जाएगा, इंजन ठंडा हो जाएगा, तो डेंसिटी बढ़ेगी कूलेंट की क्या बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगी. डेंसिटी बढ़ने के बाद, सॉरी, डेंसिटी कम हो जाएगी. डेंसिटी कम होने के बाद क्या होगा, वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा. तो क्या होगा, ओवरफ्लो टैंक विल सप्लाई एक्स्ट्रा कूलेंट इनटू द इंजन. दिस इज द फंक्शन ऑफ द ओवरफ्लो टैंक. The diagram of the overflow tank is given here. Full hot, full cold. This is the overflow tank. This cap opens
and the extra coolant will be passed inside in store into the coolant tank. Okay, yeah, overflow tank. It is called the coolant recovery tank or overflow tank. दोस्तों आज का वीडियो यही रोकते हैं हम लोग. थैंक यू वेरी मच.